Now, the BJP has demanded strict action against the Aam Aadmi Party government, alleging that this is a clear case of a scam in the Mohalla clinics and action should be initiated. स्वतंत्रता के अमृत काल में आने के बाद भी देश की राष्ट्रीय राजधानी में सुपर स्पेशलिटी का कोई इंस्टीट्यूट या ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई लैब बनाने के बजाय मोहल्ला क्लिनिक तक ही सोच सीमित थी, जो 75 वर्ष पूर्व भी थी। परंतु उसमें भी क्या हुआ, मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कई स्वयंसेवी संगठनों ने भी इस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित किया था और जांच में भी आया कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए, 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है। My colleague Pragya joins us on the broadcast with the details. Pragya, the allegations are massive. This is another alleged scam that is going to haunt the Aam Aadmi Party government. The details in the vigilance note very clearly say that there were over 20,000 tests that were allegedly conducted with no patients at all. So a clear scam that has been mentioned. Absolutely, and this is a very, very big allegation. And in fact, LG has written in his letter saying that there is a vigilance report and also the departmental inquiry report attached with it, saying that it seems like there is a host patients on whom the tests were done, and not just that, because there's no government agency who was doing these tests. These tests were, the tender was given to private agencies, and they have been doing like lakhs and lakhs of tests. So who are these tests for if there are not patients enough in Mohalla clinics? And there are many places where Mohalla clinics are even not functioning well, let alone functioning but on the response that has come in from the Aam Aadmi Party is that this is another way of targeting the government, which is doing great work.